Welcome back. You're watching Sunset TV's special broadcast on Union Budget. Since morning, we've been bringing you details of what exactly has transpired as far as the budget is concerned. What are the key highlights, key focus areas, and what do they actually mean for the nation and the citizens of the nation. I am Vishal Dahiya, and with me is my colleague Manoj Verma. Let's begin the discussion again, and let's bring in focus the other aspects as well. And for that, we joined by two more experts in the studio. Mr. Nagesh Kumar is with us. He's Director ISID, and Mr. Jayan Das Gupta is also with us, former Mr. WTO. Welcome, both of you gentlemen, to Sunset TV studios. I'll begin with you, Mr. Nagesh Kumar, and let's start by looking at the industry sector. And it's very interesting and very important as well, because the economic survey talked about how the MSME and the industries need a little bit more push, specifically with the setback they have witnessed during the COVID pandemic. And that exactly seems to have been translated in the budget as well. There has been a lot of elbow room which has been given in terms of PLI scheme, in terms of additional credit guarantee as well. So how do you assess in terms of what the budget says and how it might help the industry sector, specifically the MSMEs, if we begin with? I think there is a big push given to industry, especially manufacturing, in this budget, which is very important because this is the sector which can help India create more decent jobs. And we need a lot of decent jobs created for 12 million people who joined the workforce in India. And somehow we have, over 75 years, somehow we have neglected the manufacturing sector. We never realized its potential. And I'm very happy that this government, and especially today's budget, has given a very big push to the manufacturing sector. There are several things in this. One is the boost to PLI, scheme, and especially 19,500 crores for PLI in the solar equipment, which has a double purpose. One is manufacturing sector getting a boost, but also the climate action and net zero goal. So we realizing our commitments, our commitments towards SDGs and what was done in COP26. The other is in my view, this phased reduction in custom exemptions for capital goods sector is also going to be a game changer, because these exemptions never allowed our capital goods industry to grow. Okay. And that exemption will do a lot of good for the capital goods industry. And the third is support to MSMEs, which have been reeling under a lot of stress because of COVID-related issues. And so they're given further support through this credit guarantee. Okay. That would be very helpful for them. Okay. Mr. Ramesh Chand has also joined us, member Niti Aayog. Mr. Chand, welcome to Sunset Television. Let's talk about the sector which has been in focus for quite some time, that is agriculture and allied aspects. In terms of what the budget says and in terms of what was required, how would you assess how much more have we moved ahead? Because we've always talked about how this particular sector needs a lot more push. I think this budget has recognized the achievement of agriculture, and they are starting from there. Till now, we were obsessed with food security, grow more food at whatever cost it is to be done. That is what we were following. But this budget realized that now we have about 10% extra food compared to what is the domestic demand. Therefore, we can pay attention to long-term concern, the concern of sustainability, the concern of food safety, the concern of nutrition, and putting the growth in the long term, putting the sector on the long term growth trajectory,
rather than sacrificing long run to achieve the short run. So that has been, to my mind, the basic understanding on which this budget has made various announcements for agriculture sector. जी Another issue which has been addressed by this budget is imbalance in agriculture. You know that we are surplus in paddy, rice, we are surplus in sugar, and we are not even able to sell the entire surplus in international market. On the other hand, we are meeting nearly 55% of our requirement from import of edible oils. So this budget made a special mention of improving self-sufficiency. रमेश जी 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 रमेश जी, अगर टेक्नोलॉजी की बात मैं करूं तो कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाने की दृष्टि से इस बजट में खासा कुछ है। ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग किसानों के हितों के लिए, खेती को बढ़ावा देने के लिए किस तरह किया जाए, इसका जिक्र इसमें है। केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा, इस बात पर फोकस है। ऑयल सीड का जिक्र आपने किया, आयात घटाने की दिशा में कम करते हुए घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। ये ऐसे कुछ कदम सरकार ने उठाए हैं। आपको क्या लगता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो स्टार्टअप की बात इसमें कही गई है कि उस पर खासा फोकस दिया जाएगा, उसको फाइनेंस भी किया जाएगा, इसे आप कैसे देखते हैं? जो हमारी रूरल इकोनॉमी है, जब तक हम वहां पर एग्रीकल्चर और नॉन फार्म सेक्टर के लिंकेजेस को स्ट्रॉन्ग नहीं करते, हमारी रूरल इकोनॉमी आगे तेज रफ्तार से नहीं बढ़ पाएगी। तो इस बजट ने इसको इस एंगल से देखा है कि रूरल एरिया में फूड प्रोसेसिंग को कैसे लाया जाए, रूरल एरिया में मॉडर्न वैल्यू चेन को कैसे लाया जाए, रूरल एरिया में ज़्यादा जॉब्स कैसे क्रिएट किए जाएं, रूरल एरियाज में जो स्टार्टअप्स है उनकी रोल, उनकी भूमिका को कैसे और आगे बढ़ाएं। तो इस बजट ने एग्रीकल्चर को सेंटर में रखकर रूरल इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए जो है एक सोच साफ नजर आती है, और वो जरूरी भी है, क्योंकि यदि अकेले एग्रीकल्चर को देखें तो एग्रीकल्चर अब केवल रूरल इकोनॉमी का 1/3 इनकम कंट्रीब्यूट करता है, 2/3 अब नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर से होती है। तो सच में अब हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि इन दोनों सेक्टर के जो लिंकेजेस हैं उनको हम हार्नेस करें और रूरल एरिया में जॉब्स को बढ़ावा देने के लिए, इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, और हम फार्मर की इनकम भी जो है आगे जो वैल्यू एडिशन है वो रॉ प्रोडक्ट से इंक्रीज करेंगे, एमएसपी से करेंगे, तो उसकी एक अपनी सीमा है। लेकिन इसकी हम वैल्यू एडिशन करेंगे, उसमें ब्रांड लाएंगे, डिवर्सिफिकेशन लाएंगे, वो उसका स्कोप काफी ज्यादा है। रमेश जी, आपने एमएसपी की बात कही कि इस बजट में किसानों के खाते में 2.37 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी सीधे ट्रांसफर की जाएगी। इसे आप कैसे देखते हैं? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सीधे बेनिफिट किसान को मिले, ये सरकार का एक अहम फोकस रहा है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की मैं बात करूं, और इस बजट में भी सरकार सीधे सीधे बेनिफिट किसान को देना चाहती है। इसे आप कैसे देखते हैं? यदि हम डायरेक्ट बेनिफिट किसान को देते हैं तो हमारे सिस्टम में जो 25-30% लीकेजेस होती हैं वो सरकार को भी उनका फायदा होगा, जो फार्मर हैं उनको भी उनका फायदा होगा। हम कई बार देखते हैं कि जो हमारा फूड पीडीएस में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है उसकी लीकेज होती है और वो मार्केट में बिकने के लिए आ जाता है। अभी पिछले हफ्ते भी मध्य प्रदेश में इस तरह के केस पकड़े गए कि जो पुराना राइस था वो बिकने के लिए आ रहा था, बहुत पुराना, जो नई फसल जो है उसका राइस नहीं था। जब हम डायरेक्ट पेमेंट करते हैं एमएसपी की तो उसमें एक प्रोसेस है, किसानों की प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगी, उनके खाते लिए जाएंगे और उनके प्रोड्यूस के हिसाब से उनको पेमेंट मिल जाएगी। तो इस सिचुएशन में जो लोग दूसरे प्रदेशों से, या कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे राइस सेलर्स हैं वो अच्छी क्वालिटी का राइस इधर दे दिया और जो पुअर क्वालिटी का है फिर दोबारा से सर्कुलेट करके आने लगा, उस तरह की चीजों पे एक बहुत बड़ा चेक लगेगा। Okay, indeed, that is a very, very important point there. Mr. Gupta, I'd like to bring you in here. And when we look at agriculture sector, since Mr. Ramesh Chand was, talking in detail about how it is going to help, there is a, international aspect to that as well.
he mentioned one of that in terms of how self-sufficient we are in certain aspects, in certain crops. But the focus now has to be shifted elsewhere as well. Yes, indeed. The issue is that we had focused because of the scarcity of cereals. We had focused during the Green Revolution primarily on paddy and wheat. And that has led to, of course, we have done very well. And he mentioned that we are producing 10% year on year excess, which is leading to certain problems because you can't dispose it off within the country. The demand is not there. You can't sell it at the MSP rate which you have procured. You can't sell it in the international market. That the WTO prohibits. And then what do you do with that grain? The other very disturbing aspect of this whole issue is that most of the paddy, for instance, which is procured, is leading to serious water depletion in the 4 northern states of Punjab, Haryana, Western UP, and to a certain extent Madhya Pradesh. And that is, we are teetering on the brink. So instead of producing more rice and wheat, which we don't know what to do with, and at the same time depleting our very scarce water resources in the northern states, we should diversify crops. Okay. That the budget has also mentioned that. Okay. Crop diversification is required, and tailoring our production to meet our own requirements first. And if there is a surplus, it has to be converted into food products. Food products. Into downstream products. For instance, the Europeans don't sell rice or wheat, but they sell a lot of baked items. They sell a lot of, for instance, they don't sell much grapes, but they sell a lot of wine and other spirits. Therein comes the agri-allied sectors. Processed Processed and foods, that yeah. is why the government, the budget has mentioned food processing industry as a major thrust area in this budget as well. So we have to bear in mind that it is not going to... Okay. Indeed, that is, really important aspect. Since you mentioned the water scarcity part, there, of course, that brings into focus, Mr. Chand, one more aspect of the budget announcements, and that is the river linking project, because the Ken-Betwa river linking project is the beginning. But that is a sort of a necessity which we have to realize in various other parts of the country as well to deal with, of course, the issue of water scarcity, not only for drinking water purpose, but more specifically for agri purposes as well. In fact, we need to do a lot there because still we have only 50% area under irrigation. For rest of the 50% area, we do not have any assured system of irrigation. It has to depend upon rain god. One of the major obstacle in the interlinking of rivers is that the consensus is not reached among states. Now, Ken-Betwa is a classic example of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, the 2 states agreeing, and both will be benefited a lot. 8 lakh hectare area will be brought under irrigation. Another big advantage of interlinking of interstate rivers is that if 2 states agree on that, it is declared as a national project. Okay. That center bears most of the expenditure of that project, most of the investment in that project. But there are a very large number of proposals which are pending for not only years, more than decades. I am member of the steering committee which holds its meeting regularly. Indeed. So one or the other kind of conflict is brought by other states. I feel that states need to look forward. They need to show maturity. They need to make their public understand that let us not make it a prestige issue. It is a mutually beneficial kind of things. If Karnataka benefit, Andhra also benefits. Something like that. If Maharashtra benefit, Gujarat also benefit, and vice versa. Indeed. So we need to do a lot. There is a lot of scope. Work has already been done. Lot of feasibility studies have been conducted. I hope states will take encouragement from this Ken-Betwa projects, which most of it is finalized. 1,400 crore has been announced in this budget also.
last mile connectivity. Some issues are meant to be addressed, but overall, I think more than 45,000 crore rupees has been invested in this Ken-Betwa interlinking. Okay. And I'm sure it will change the face of much distressed Bundelkhand region. Okay, indeed, that is going to be really important there, the river linking projects. Thank you so much, Mr. Ramesh Chand, for sharing your views on the agriculture and allied sectors. Key focus areas, as all of us have been looking forward to in terms of what the government does when it comes to agriculture and the farming sector. लेकिन अगर विशाल जी मैं बात करूं एजुकेशन सेक्टर की, इसके लिए भी सरकार ने जो मौजूदा परिस्थिति कोविड ने नागेश जी पेश की, उसको देखते हुए डिजिटल का खासा जोर दिया। ई कंटेंट की बात मैं करूं या डिजिटल विश्वविद्यालय की बात जो की गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? मेरे समझ में आई थिंक जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अभी की बात हो रही है भारत में, उसके उपयोग की और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से हमारे सोसाइटल बेनिफिट्स को एक्सप्लॉइट करने की बहुत बड़ी संभावना है। और ये इसका इन्होंने एक कई सारी चीज़ें अनाउंस करी है। एक तो डिजिटल विश्वविद्यालय और डिजिटल कंटेंट और जो बच्चों के स्कूल के 2 साल एक तरह से ख़राब हुए हैं, जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन जिनको ज़्यादा डिजिटल कनेक्टिविटी नहीं थी, उनके लिए बहुत सारे उन्होंने टीवी स्टेशंस जो एजुकेशनल कंटेंट को रिले करेंगे, वो उनकी स्थापना की बात की है। तो ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इंडिया इज़ पासिंग थ्रू a phase in its digital in demographic transition, which is a youth bulge kind of phase. So we have a very young population, and if we invest in them, then we can reap the demographic dividends. Otherwise, it could become a nightmare. जाहिर सी बात है कि नई शिक्षा नीति की बात भी सरकार ने की है, उसका ऐलान भी सरकार कर चुकी है। और जो कोविड के कारण परिस्थिति उत्पन्न हुई, हालांकि डिजिटलकरण शिक्षा का हो रहा था, पहले से भी शुरू हो चुका था, लेकिन वर्चुअल प्रयोगशाला और कौशल ई प्रयोगशाला, इसका भी जिक्र इस बजट में किया गया। तो साफ तौर पर एक संकेत है कि शिक्षा का भी डिजिटलकरण के जरिए कैसे छात्र और शिक्षक उस परिवेश में ढले, इस पे भी जोर इसमें दिया गया। लेकिन एक महत्वपूर्ण जैन जी, मैं आपसे बात समझना चाहूंगा कि खासतौर से रेलवे की बात अगर की जाए, वंदे भारत ट्रेन 400 ट्रेनें, जिस तरह से जाल एक बिछाने का ट्रेनों की बात इसमें कही गई है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कनेक्टिविटी की बात जब होती है तो रेलवे से बेहतर शायद साधन अभी भी कोई मुझे नहीं लगता। आप कैसे देखते हैं इसको? ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन था, उसे समेकित कर दिया गया है और उसका अब गति शक्ति स्कीम के नाम पर उसे 100 लाख करोड़ की योजना है। उसमें सभी जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, चाहे वो रेल हो या सड़क हो या आपके इंटरनल वाटरवेज हों, सबको एक समेकित करना है, इंटीग्रेट करना है। और उसके 100 स्टेशन करीब 3 साल में उसके स्थापित होंगे। तो रेल जो है आम आदमी के लिए अभी भी सारे देश में ये एक सबसे बड़ा यातायात का संसाधन है। गुड्स ट्रैफिक के लिए भी, अगर आप बहुत रिमोट एरियाज़ को छोड़ दें, जो रेल से कनेक्टेड हैं, वहाँ लोग पसंद करते हैं रेल से भेजना सामान। लेकिन हमारे जो रेलवेज़ हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अभी बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि मेन जो समस्या आती है, जो खास करके ट्रंक रूट्स पर, वो लाइंस डबल लाइंस हैं अधिकतर। उसमें एक जो मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर का है, उसमें एक एडिशनल लाइन हमारा स्थापित हो रहा है, जो सिर्फ फ्रेट ट्रैफिक को ही, जिस पर वो यातायात होगा। उसी तरह से हर क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, अमृतसर से कलकत्ता, उसके बाद कलकत्ता से चेन्नई, दिल्ली से बेंगलोर, चेन्नई, सारे रूट्स पर अलग से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार होंगे, जो आपको एक प्रतिस्पर्धा भी प्रस्तुत करेंगे रोड ट्रांसपोर्ट के बनिस्बत। और दूसरी बात है कि इससे आपका जो सड़क यातायात पर जो एक दबाव पड़ता है, उसका भी वो भी आपका स्प्रेड करेगा। और रेल जो हमारे लिए इतनी बड़ी व्यवस्था है, वो इस भार को बहुत अच्छी तरह से वहन कर सकता है। Okay. The infra push, Mr. Nagesh,
That's really important here. And as Mr. Gupta was referring to railways, it's not just railways. It's about the expansion of national highways as well. Then we're looking at in terms of infra push, the housing sector also. Then the northeastern states, the developmental projects there, and it has a varied effect in terms of not only putting infrastructure in place but also providing job opportunities and investment as well, and of course the industry also benefits. Yes, absolutely. I think the infrastructure push that is given in this budget through Gati Shakti, the 7 engines of growth, that will be, I think, again, in my view, a big game changer for industry, because logistics, facilitation and ability to transport goods from one place to the other, raw materials from one place to the other quickly and just in time is very, very critical for a manufacturing sector to grow. And this is what it will do. It will also help in improving the competitiveness of India's manufacturing, because the moment the industry are able to send their goods to ship to the ports and to be shipped quickly to their destinations, that logistics competitiveness will help in building the overall competitiveness of the manufacturing sector. Okay. So it's a very good step. Okay. We also have with us now Dr. Arvind Veermani, former advisor to the Ministry of Finance and chairman of EGROW Foundation. Welcome, Dr. Veermani. When we are talking about the budget, the first thing we would like to understand from you is, of course, investment. But before that, let's focus on the fiscal discipline there as well. There's a marginal slippage from 6.8 to 6.9%. But when we look at the next year's projection, 6.4% again, very difficult to maintain this given the fact that we've been battling the COVID pandemic for 2 consecutive years now. But an effort has been made, and a successful one. Yes, so you got to remember that the budget was based on an assumption that the COVID was over. And I think very few people, though everybody claimed they were predicting a second wave, I think very few people would have put their money on the line for a second wave, which happened. So some of the extra expenditures which have occurred, for example, the food, the zero price, the free food subsidy had to be extended for another year, if I remember correctly. So things like that, which expenditures which came from the second and now third wave really have increased the fiscal deficit by 0.1. But I think it's a money well spent and will compensate for a lot of the effect of the COVID on the GDP and the incomes of the poor. Mm-hmm. So that is the first thing. The second is, I think the 6.4% for the next year, the glide path, as the economic survey had said, that there is enough scope, given that the some of the tax increases, for example, the GST and the corporate tax improvements, which again were not really anticipated when the glide path was made. I think the government will be able to achieve the glide path. And finally, the quality of expenditures, I think, have been maintained. I won't go into detail, but if you have follow-up questions. Okay. We'll come back to the investment part there as well. But we also have with us Professor Arvind Mohan, Manoj ji. जी अरविंद मोहन जी, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि अभी रोजगार पे हम बात कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिस तरह का जोर दिया गया है, एमएसपी पे एमएसएमई पे जिस तरह का जोर दिया गया है, कृषि क्षेत्र पे जिस तरह का फोकस किया गया इस बजट पे, उससे एक साफ है कि सरकार ये चाहती है लोगों की जेब तक पैसा पहुंचे, उनके पास पैसा बचे, रोजगार लोगों को मिले। आप कैसे देखते हैं, खासतौर से अगर मैं पीएम हाउसिंग की बात, स्कीम की बात करूं तो 48,000 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किए गए हैं। मैं सिर्फ हाउसिंग स्कीम की बात नहीं कर रहा हूं, लोगों के सिर पे छत हो, ये अच्छा एक लक्ष्य है, लेकिन साथ ही रोजगार की दृष्टि से भी आप इस स्कीम को कैसे देखते हैं? देखिए, बजट में कुछ चीजें बहुत अच्छी की, जैसे आप हाउसिंग का जिक्र कर रहे हैं जी, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है, या थोड़ी देर पहले आप 7 इंजन्स की बात कर रहे थे, ये निश्चित तौर पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है तो निश्चित तौर पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी आगे लेकर के जाएगा। तो ये सब बहुत सारे पॉजिटिव्स दिख रहे हैं।
कुछ जैसे आप स्लिपेज की बात करें तो मुझे लग रहा है कि फिस्कल कंसोलिडेशन शायद इस बजट में इशू नहीं है, लेकिन कुछ क्रिटिकल चैलेंज हैं जो मुझे इस बजट में थोड़ा खटक भी रहे हैं। जी। पहला मेजर चैलेंज जो दिखाई पड़ रहा है, हमने एग्रीकल्चर पे जिस तरीके का पुश होना चाहिए था, जिसको हम सेकंड जनरेशन रिफॉर्म की कैटेगरी में ला सकते थे, वो खासतौर पे तब जब आप 25 साल के लिए ग्रोथ पाथ क्रिएट कर रहे हैं। तो 25 साल के ग्रोथ पाथ में एग्रीकल्चर को उस तरीके का पुश नहीं दिख रहा, क्योंकि एलोकेशन आपका रियल टर्म्स में घट गया है, एग्रीकल्चर पर भी, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी पर और रूरल डेवलपमेंट पर भी। इसी तरह जो दूसरा मेजर पार्ट है रिफॉर्म स्टोरी का, जिसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं, हेल्थ और एजुकेशन, रियल टर्म्स में हेल्थ पर भी और एजुकेशन पे भी आपको एलोकेशन रियल टर्म्स में घटता हुआ दिख रहा है। ये मेरे लिए थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा है। तो जहां आप एक तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को पुश दे रहे हैं, उसके साथ आप जिस तरीके का एक कम से कम फ्रेमवर्क, हमें दो चीजें महत्वपूर्ण हो जाती है। एक तो पॉलिसी गाइडलाइंस आप किस तरीके की लेकर के आ रहे हैं, वो भी आपको रूरल डेवलपमेंट के लिए उस तरीके की पॉलिसी गाइडलाइंस नहीं दिख रही। निश्चित तौर पे लॉजिस्टिक्स का कंपोनेंट यहाँ पर आया है इंजन्स में, लेकिन और ह्यूमन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट में थोड़ा मेरी अपेक्षा जितना बजट करा उससे ज्यादा थी। Okay. Dr. Veermani, do you agree with that, what Professor Mohan is pointing out in terms of, bit more focus required when we're talking about health and education sector, and in terms of, the money allotted, of course, and the way it is being spent? Right, so I missed the initial thing, so I want to give an overview which partly actually addresses your question, because there was some problem with connecting. Anyway, so basically I think there are four underlying, the overall thrust of the budget, I'll be very quick, are inclusive growth, and there are four drivers of that. One is infrastructure, the second is digital economy, the third is green economy, and the fourth is urbanization. Infrastructure you have discussed in detail before I came, so that is fine. But I want to emphasize the digital economy. The digital economy is going to drive growth for the next 5 to 10 years. But it's not just growth for urban areas, it is actually inclusive growth. I think it is going to be a key to drive empowering the rural people, whether it's agriculture or other rural areas. And you see throughout the budget, in every area, in every sector, there is something to do with digital economy. So take telemedicine, Indeed. which is going to be critical for rural areas. Talk about e-education, skilling. They talked about a university for preparing content. They talked about various things in different languages. There is an extension portal for agricultural sector, e-portal, which will give extension services or answer agricultural questions. There's the issue of startup. So I'm just giving that as an example. Across the board, you look at budget, any sector, the digital economy is given a big role. Is being some program being started, but in my view, this is going to be a huge driver in the next 5 to 10 years. Okay. And finally, and then second, the green economy, it is slow because we have all these legacy problems, in terms of coal-fired plants, etc. But in about 10 years, it will gather stream, and after the digital, maybe from 10th year to 15, it will be a big driver. So the long-term one has to also see the vision. I mean, Professor may be quite right about the immediate problems of agriculture, but I think in a 10, 15-year context, urbanization, for example, if you look all across the world, how did countries become developed? Urbanization is an essential driver of productivity growth and quality of living of the public. We can get very nostalgic about rural areas, rural life, etc. Okay. But urbanization is what has driven the developed countries and the quality of life in developed countries. Professor Mohan, that is a very interesting point there, that the urban development and the rural development will have to go hand in hand. And a common theme which we've been talking about since morning, and which is pretty much evident in the budget as well, and has been evident in the government's policy over these years, that is the digital front, that is the digital theme. That seems to be forming a very important part of all aspects, whether we are talking about social sectors, or we're talking about industry, or we're talking about the education or the urban development as well.
I'll fully agree with what Dr. Varbhani is saying, that there is a critical push to digital intervention. As a matter of fact, even the allocation have risen from around 28,000 crore to 80,000 crore. So that's a huge push that you are giving to digitization. But the concern, allow me to be the devil's advocate. See, the concern is that in the pandemic period, more than close to 3.5 crore people lost their jobs all across the country in different sectors and have come back to agriculture. So that itself is a huge indicator of the critical need for employment. Now, when you are looking at employment, in the urban area, your largest employment generation happens in the informal sector. So as far as the informal sector is concerned, it in the urban area, it is responsible for almost 64% of employment and close to 80 to 90% of production. In rural area, it is obviously agriculture and allied activities and some non-agricultural activities. So these two areas, if you're, it's good that maybe 15 years later, you might be able to create something extraordinary. But people, farmers, and these informal sector people are in critical need of support. Now, that support, while you are going for digitization, while you are scripting things, digitization is not going to change India's agriculture overnight. And as a matter of fact, alone, it will not be able to change India's agriculture. So I think that is something which, that gap you'll have to find ways. At least on the policy front, I will want to hear from the government sooner rather than later that what they are wanting to do for the immediate crisis that agriculture is facing and for the immediate crisis that particularly the informal sector and the MSMEs are facing. So there are the direct interventions are particularly missing. Indirectly, fine, these 7 engines might be able to do something and digitization might be able to do something maybe 10 years down the line, 15 years, that will happen partly. Okay. But that immediate intervention is what I would have wanted to see in the budget. Okay, the short-term goals will also have to be kept in as much focus as the long-term जी goals. बिल्कुल लेकिन अरविंद मोहन जी, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर सरकार ने खासा फोकस अपने इस बजट में भी दिखाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने खासतौर से पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए पीएम विकास पहल नाम की नई योजना शुरू करने की बात कही है। आप कैसे देखती हैं आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट की दृष्टि से इस पहल को? देखिए, नॉर्थ ईस्ट का इंटीग्रेशन बहुत क्रिटिकल है जी। पिछले 10 सालों में तमाम प्रयास के बावजूद हम उस तरीके का इंटीग्रेशन नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि उस दृष्टि से एक अच्छी पहल है और अगर हम इस तरीके का इंटीग्रेशन कर पाए, लेकिन जहां तक बजट के सवाल है, एक अच्छी स्कीम है, एक अच्छा इंटरवेंशन है, लेकिन पास का जो अनुभव दिखाता है कि हमने पास में भी फाइनेंशियली बहुत सारे एलोकेशंस किए नॉर्थ ईस्ट के लिए, लेकिन उस तरीके का इंटीग्रेशन नहीं हो पाया और लीकेजेस बहुत फिनोमिनल थे। तो एग्जीक्यूशन बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर हम एग्जीक्यूशन ठीक से कर ले जाएंगे, मुझे लगता है इस स्कीम के कुछ हमें लाभ जरूर मिलेंगे। Okay, that seems to be really interesting and important. Mr. Jainas Gupta, quickly on two aspects which have come through the discussion with both Professor Mohan and Dr. Veermani there as well. That is, putting in sync the urban and the rural development and using digital intervention as a tool as well. Also, as Professor Mohan is pointing out, short-term goals will also have to be kept as much in focus as the long-term planning. That's absolutely true. The two have to coexist, and in the case of a very large populous country like China, they have only 2-3 years ago, they have turned the corner and more than 50% of their people are now living in cities. In the case of India, it is a goal which we have to achieve, because as Dr. Veermani was very right in pointing out, industrialization is key, and one of the prerequisites for industrialization is urbanization. So we can't run away from there. And it has to be, we have already seen the initiation of the Smart Cities project. It was about brownfield projects. But these other schemes, the Sagarmala scheme, the national, industrial infrastructure project, now all these will bring up new cities, new destinations for manufacturing, for service production, and for catering to the rest of the country. So these will in effect act as hubs of excellence from where there would be
multiplier effects. Okay. So, rural areas would be extremely important. Providing a good livelihood, good health facilities, good comparable education facilities as available in the cities is extremely important for the rural areas. And over everything else, an equal opportunity to earn a decent income. Okay. That is extremely important. Okay. So we Ji. will have to keep balancing the two. जी नागेश जी, अगर हम बात एमएसएमई की करते हैं तो उसके साथ साथ बात आती है मैन्युफैक्चरिंग की, बात आती है सर्विस सेक्टर की, बात आती है, और इस बात की चर्चा आज होती भी रही कि सर्विस सेक्टर को क्या मिला, क्या नहीं मिला, मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा फोकस हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत का जब हम लक्ष्य रखते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग खासतौर से अगर मैं रक्षा क्षेत्र की बात करूं, उसको लेकर भी सरकार का खासा फोकस देखने को मिला है। आप कैसे देखते हैं जब हम सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं इसको? देखिए, सर्विस सेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन भारत में अभी अर्थव्यवस्था का 56% जो जीडीपी हमारा है वो सर्विस सेक्टर से आता है। तो सर्विस सेक्टर को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली पिछले 20 सालों में ग्रो करने की, और वो अब हम एक मतलब सर्विसेज में, स्पेशली आईटी सॉफ्टवेयर में एक महाशक्ति बन गए हैं। लेकिन इस दौरान मैन्युफैक्चरिंग की उपेक्षा हुई या नेगलेक्ट हुआ, जिसकी वजह से हम जो लोग अभी अंडर एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर पाए, डिसेंट जॉब्स। तो उस लिए अभी मेरे ख्याल से सरकार का ध्यान मैन्युफैक्चरिंग को पुश करने की तरफ ज़्यादा जा रहा है, और वो बहुत सही कदम है। मेक इन इंडिया का जो मतलब कैंपेन शुरू किया है प्रधानमंत्री जी ने, उसको इसमें खासी बढ़त और बढ़ावा या पुश किया गया है। और जैसे 14 सेक्टर्स में उन्होंने पीएलआई की घोषणा की है, उसके कारण बहुत सारे 6 मिलियन जॉब्स विल बी क्रिएटेड, और इन्वेस्टमेंट और निवेश बढ़ेगा तो उसके मल्टीप्लायर इफेक्ट्स होते हैं जो इकोनॉमी को रिकवरी की तरफ भी ले जाएंगे। Okay, okay. Dr. Veermani, one more aspect which I'd like you to dwell upon and analyze that as well. That is with respect to taxation and corporates as well as individuals. Now, there are very key and important explanations which have been given by the finance minister vis-a-vis some aspects of taxation and some new announcements as well. How do you think that will impact the overall sentiment, when we're talking about the corporates and the industry? There's two aspects of taxation. There is the micro stuff, which, generally the experience over the last 5 years is that micro changes really disturb a lot of people without achieving much. So I think one of the efforts has been in this budget, because in 2019-20 budget, there were a lot of changes, and that really had a negative effect on sentiments across the board. I think there has been a deliberate decision to do the minimum on the taxation front. So the idea seems to be to not disturb the apple cart, let the economy go back on course. However, there are macro aspects. We have discussed before about the direct tax code, the GST reform, the big customs reform that really require a macroeconomic view and understanding, a deeper understanding of the economics of taxation. I think that really hasn't come into the government, I'm afraid. I think so better if that is so, what they are trying to do is customs में थोड़ा बहुत adjustment. They are looking at exemptions which create inverted duty structure. Last year also, पिछले साल भी इसकी चर्चा हुई थी बजट में, तो वो थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं कस्टम्स में, पर जो इनकम टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स तो प्रॉब्लम है ही। जीएसटी रिफॉर्म तो जीएसटी कमेटी वो करता है, काउंसिल जिसमें स्टेट्स हैं, तो वो तो बजट में probably that's why it's avoided. Don't want to raise unnecessary controversies on GST. तो कस्टम्स ड्यूटी में थोड़ा बहुत हुआ है, बट अगेन this is one thing which slightly worries me,
that there is not enough understanding, and I don't mean just the government bureaucrats, I mean even among many economists, a very specialized subject, the macroeconomics of taxation. Okay. अंडरस्टैंडिंग नहीं है क्योंकि डायरेक्ट टैक्स कोड तो 2009 में जब मैं सीए था उस वक्त मेरी लास्ट मीटिंग थी, मैंने अप्रूव किया था जो कोड बना हुआ था. एनीवे डजंट मैटर. सो but if that is the thing, it's better to leave it alone, because we have seen every time there is some little change, वो कैपिटल गेन्स टैक्स का चेंज कर दिया, इतना हल्ला बल्लू मच गया, it affects confidence. So Okay. from that perspective it's better that leave it alone. There is always a scope for improvement जी, when we're talking about that बिल्कुल aspect. बिल्कुल विशाल जी, जब भी बजट आता है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स की खूब बात होती है, इनकम टैक्स स्लैब्स की भी खूब बात होती है, क्योंकि हर कोई उम्मीद करता है व्यक्तिगत रूप से. जी मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो मेरी व्यक्तिगत वो है कि केवल क्या बजट के मायने ये हैं कि व्यक्तिगत रूप से इनकम टैक्स में क्या हुआ, ये एक हो सकती है अपेक्षा हमारी, लेकिन या ओवरऑल हम इंफ्रास्ट्रक्चर, देश की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, इस दृष्टि से देखना चाहिए. देखिए, ये तो बिल्कुल सही. बजट तो आय व्यय का एक आय और व्यय का एक ब्यौरा है जी. और किस तरह से हम अगले साल हमारी आय कहाँ से होगी और हम किन चीज़ों पर खर्च करेंगे. इसमें ये सही है कि जो मिडिल क्लास खासकर है या जो कॉरपोरेट सेक्टर है, उनका विशेष ध्यान रहता है कि अगर कोई इनकम टैक्स में बेनिफिट हो और अगर कॉरपोरेट टैक्स में बेनिफिट हो. लेकिन अगर आप देखेंगे उसको राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, तो कहीं से तो आपका टैक्स आएगा तभी खर्च हो पाएगा जी. और इसलिए जो हमारे राष्ट्र के हित में है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सर्वमान्य है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आप खर्च करेंगे, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, उससे रोजगार का सृजन होगा और उससे ग्रोथ होगा, जीडीपी में बढ़त होगी. जी. तो ये तो इसलिए टैक्स बहुत ज़्यादा अगर आप बढ़ाएंगे तो टैक्स इवेजन शुरू होता है, टैक्स अवॉइडेंस शुरू होता है, इसलिए बढ़ा भी नहीं सकते हैं ज़्यादा. अगर आप बहुत घटाते हैं तो उसमें एक सीमा से ज़्यादा अगर घटा देते हैं तो फिर आपकी आय घट जाएगी. Indeed. लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अगर आप रैशनलाइज करते हैं, कुछ घटाते हैं, तो टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगा और टैक्स आपका ज़्यादा उसमें आय होगी. Okay, indeed, that's a very interesting way of looking at things, because when we look at this budget, Mr. Dasgupta, there is a lot of talk about and focus as well, building that trust between the government and the taxpayers as well. And the finance minister said it in so many words also, and that clearly explains that ultimately individual aspirations will exist, but it's always nation first there. Thank you so much, Mr. Jayan Dasgupta, Mr. Nagesh Kumar, as well as Professor Arvind Virmani and Professor Arvind Mohan there for sharing your views and insight on the union budget which was presented today. Those were key elements. And on the other side, you will get to see the interview with the finance minister, which was recorded earlier. She'll herself explain the key nuances of the union budget, which was presented by her earlier in the day today. Stay tuned to Sunset Television. Thank you.